यस हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम, स्वागत है आप सबका आज के इस 27th सेशन में। सो टुडे इज 27th episode of our expert talk, and today our guest will be Mr. Vatsal Thakkar, who will speak on sales in and around. So do join in our live sessions, do follow us, do like us, do share this current live session, and do subscribe our YouTube channel Vipul the Wonderful. Also press the bell icon for the future updates. So let us invite our guest of the session today. So let us invite Mr. Vatsal Thakkar. Thank you, Yes Mr. sir, good Mali. evening. Yes Good sir, good evening. evening. Welcome, welcome. आपका Thank आपका you. Thank स्वागत है. you. And first of all, thank you so much for accepting our invitation and joining in today's expert talk session. So we are very much thankful to you, sir. धन्यवाद धन्यवाद आपका और वेलकम ऑल द फ्रेंड्स। आप सबका अभिवादन है। हाँ, यस सर, सो लेट मी आज के सेशन की शुरुआत करते हैं. इट्स ऑल अबाउट सेल्स इन एंड अराउंड. सो प्लीज स्टार्ट द सेशन एंड गिव अस अ ब्रीफ अबाउट टुडेज सेशन एज वेल एज अ ब्रीफ अबाउट योर इंट्रोडक्शन सर. सो ओवर टू यू नाउ. well. Thank you. Thanks once again, and welcome all the friends who are online right now. Well, talking about me, I am a sales freak, I would say, and I would always like to be on the field. I started my career after my graduation in mathematics, science graduation in mathematics. I started my career in academia. I was informal educator at one of the prime institute set up by Dr. Vikram Sarabhai, that is known as a community science center in Ahmedabad. Okay, I was teaching astronomy to school students, school children all around the country. Later, after the spending five years to the academia, I came to the sales, starting from the say the the door to door kind of sales, up to being a sales manager in one of the good company, premium company in Ahmedabad in my city. So I spent around 13 years in domestic sales. Later, I switched on to the international and almost similar experience in international sales. I had been posted to different cities, different places. Maybe I mean, say I was posted as in Hong Kong as well as I stayed in Dubai so many years. Now I'm back to the country, doing my own export business, especially marketing. Then I am also giving marketing and sales lessons, especially because I want myself to be known as a salesman. Well, that's about me, not much. Now let's talk about the today's session. Today's Yes sir, session. thank you. Yes sir, please. Today's session, as I told you, we'll talk all about sales. Now, sales is a the quite a wide subject, quite a deep subject also, and if we talk about it, we can go on and on and on and on for days and days. But here we will concise the entire subject. We'll talk especially about the definition of sales and salesperson, as well as process of sales, how you can go step by step, and how you have to keep those steps intact. Okay, that should be in it उसके क्रम में ही होने चाहिए, उसे आगे पीछे न हो, वही अच्छा है. Then we'll talk about the salesperson definition, characteristics, what he has to do or he or she has to do, or what they shouldn't do, what should be the ideal salesperson, what should be what the top sales. Okay, so it's all about quite generalized, quite the generic kind of things. We'll not talk anything specific. And I would before shooting off this particular session, I would ask my say the viewers
to involve themselves by putting up questions, but again, should be generic questions, quite generalized. Okay, specific questions can be answered, but it requires more information as well as more time also. Okay, so Yes, mm, sir. Thank you. this Thank you so much for the crisp intro and the yes, yes. Thank you, Bharatji, for joining in today's session. Thank you. Please do ask us if you have any questions during the session. So, starting up with the session, starting up with this first question. So, very generic. What is sales from your point of view? I heard your definition is somewhat different from the dictionary. So please, we have discussed many times and we have discussed about sales. So please let us know once again from your end. बताइए sir. सेल्स डिक्शनरी में जो लिखा है वो ये है कि भी आप कुछ बेचते हो, उसके पैसे लेते हो, सेल्स कंप्लीट। नो, that's not actually the sales. That's just the trading. It's just you're doing some kind of the लेन देन करते हो आप, और कुछ नहीं है उसमें। सेल्स मीन्स you are building a relationship. This is, and in general, if you say that business itself is a building relationship, and that is also such kind of a relationship which is providing win-win situation on both the parties or all the parties involved. Okay, so sales is not just लिया दिया और भूल गया. It's not like that. सेल्स का मतलब है आप किसी के साथ अच्छे तरीके से जुड़ते हो, और उस जो संबंध बनता है, वो एक प्रोफेशनल रिलेशन बनता है, वो संबंध में दोनों का फायदा होता है। तो ये जो मैं बात है दोनों का फायदा, उस पे ज्यादा एम्फेसिस करूंगा, क्योंकि सेल्स पर्सन ऐसा कभी ना माने कि मेरा फायदा हो गया, काम खत्म। नहीं, सामने वाले का भी फायदा होना चाहिए, वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। और इफ यू आर एबल टू बिल्ड रिलेशनशिप प्रॉपरली, then it goes on and on and on. And it's not only you have to build the relationship, you have to the उस वो संबंध को बनाए भी रखना है। So that's my definition, or you can say my point of view of the sales. uh, I think you can go for the further question, or I'll give you some details about the sales. Yeah, Okay, yeah, I'll elaborate this point. So why I am telling you that sales is a relationship and not the other way around. Of course, sales में आप कुछ बेचते हो, उसका पैसा लेते हो, और उसको be, if you are properly a salesperson only, then आपका commission लेते हो और you are happy. But how the customer will be happy? Of course, customer is happy because he got the thing which he want. He got the product which the person want. But again, whether with this product his problem is solved or not. So when I'm talking about the relationship is only not only about the आप उसके साथ हाय हेलो रखो और ऐसी कुछ बातें करो, ऐसा नहीं। तो जो बात है वो है आप उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करो। कस्टमर आपके पास आता है, आपकी प्रोडक्ट खरीदने आता है, इट्स नॉट ओनली लाइक दैट, ही वांट्स द कंप्लीट सॉल्यूशन विथ योर प्रोडक्ट। सपोज यू आर सेलिंग सम काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, सो यू हैव टू गो deep into the root of the problem. Then you try to find out the proper solution with the help of your product. आपकी प्रोडक्ट से आप उसका सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करो और वो सॉल्यूशन उसके सामने रखो। तभी वो रिलेशनशिप बनती है, तभी वो बनता है कि भी आपका जो रिलेशन है वो विन विन सिचुएशन पे रहता है। इफ कस्टमर हैज गॉट हिज प्रॉब्लम कंप्लीटली सॉल्व, okay, then what will happen? That relationship will go on a long way. At the same time, the other person, the person on the other side, that means your customer, now he became your customer. He will, be proud of that kind of relationship. And that is most important. That somebody is proud of your relationship. So that is how it should be like that. A salesperson, फोन पे आपने सेल्स कर दिया या फिर आपने खुद जाके भी सेल्स कर दिया, बट दैट रिलेशनशिप बिल्डिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, so I would say that this subject is, as I said in the beginning,
See, it is quite deep. I can talk on and on and on the Very, subject. very Let's rightly said. move on to the Yeah, next yeah. step, I So believe. that sounds interesting. You have explained it. Elaborated it very interestingly. So moving on, what's the process of sale according to you? Sales. Sales process. Yeah. Yes. As I said, sales is relationship building. Okay. So as in our the our life, all the relationships which we are building are going step by step. एक झटके से किसी को आप अपना नहीं बना सकते हो। जैसे हम बहुत जो लोगों को इंटरेस्ट भी लगेगा और बहुत जो इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है वो स्पाउस रिलेशनशिप, ओके, हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप, दैट कैन नॉट बी बिल्ट इन अ डे और टू, ओके, और दैट कैन नॉट बी बिल्ट विदाउट गोइंग इन पर्टिकुलर स्टेप्स। आप पहले मिलते हो, आप एक दूसरे को जानते हो, परिचय मिलता है, बाद में एक दूसरे के इंटरेस्ट जानते हो और आगे रिलेशनशिप बढ़ती है। Similarly, in sales also, that it has to have a proper process. And I have defined certain steps. See, definition from person to person, from the expert to expert could be different, but I have defined certain steps. Okay, and what steps I have defined, that can also be the more, and I can the further the categorize those steps also. But the step which I made, those are the in the starting you do the prospecting. Prospecting का मतलब ये है कि भाई आप अपने अपने पास जो लीड्स है, जितने भी लीड्स आए हुए हैं, तो उसमें से आप चुनते हो, आप अपने तरीके से चुनते हो कि भी कौन मेरा प्रॉस्पेक्ट बन सकता है। नाउ वील सी इन द नेक्स्ट स्टेप that what exactly the meaning of or definition of the prospect, okay. सो दो Right. सो शुरुआत करते हैं प्रोस्पेक्टिंग से। दूसरा जो स्टेप है या जो हम मिडिल का स्टेप करते हैं, कहते हैं मिडिल में भी पहला स्टेप है। सो सेल्स इज योर स्टार्ट, योर मिडिल एंड देन एंड, ओके। सो मिडिल में दो स्टेप्स है कि मिडिल में जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज इंटरव्यूइंग। इंटरव्यूइंग मीन्स आप मुलाकात करते हो, and that can be the that can go a long way also. It may not be a single interview or single sales meeting. It may be one or two or three or more sales meeting, and it may go on weeks and months also. And sometimes, I mean, I have seen and I have experienced also over a period of years. Okay, those sales meeting goes on and on. Then the steps comes. The third step comes the proposal, or you can say the presentation. So during the meeting, whatever information you have gathered, you put it into the proper proposal format and then provide it to the customer, or say the prospect. It's not yet customer, that person is still your prospect. So you provide it to the prospect, and then the again the negotiation goes on and discussions and so many other things are going on, and then comes the final step, final say the last step, that is a closing. Now, according to me, uh, prospecting is most important, okay, and then comes the closing is also most important. In between two steps are important again, but these two steps, prospecting and closing, how they are important, they will talk in our later sessions also. Uh, mm, Right. okay, so that is the actual definition of the sales process, and that is how the sales should go on. And I would insist that it should go on into these steps only. Okay. So when you're doing a prospecting, don't try to close the sales at the same time. Okay. And that is the most mistake people are doing, sales people are doing. सबसे ज्यादा अगर कोई सेल्स पीपल अगर कोई भूल करते हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहले यही चलता है कि मैं जल्दी से सेल्स कैसे क्लोज करूं। बट इफ यू आर गोइंग थ्रू द स्टेप्स ओनली, देन ओनली द सेल्स विल बी कंप्लीटेड एंड योर रिलेशनशिप विल कंटिन्यू। ओके, so that's all about this process of the sales. Yes. So you said the first
First step is processing. So can you please explain it in detail? Sure, let me tell you about the prospecting. And as I told you in my last question, that prospecting is a most important step. Why? Okay. There may be some steps before the prospecting, and especially for us, when we talk about the sales in India, we have some steps before prospecting, and that is the database collection. Okay, so we collect the data, we do the prospecting. Now, what exactly the prospecting is? Prospecting, as I told you, आप जितने भी डेटा आपने कलेक्ट किया उसमें से आप छानते हो कि भी मेरे प्रोस्पेक्ट कौन है. Okay. So here two things are important. That the definition of the prospect and how you do the prospecting. Now, this particular subject, I have already, the put around 17 chapter in one of my book that how to do the prospecting. Of course, that book is in Gujarati, but this subject is so deep, and why it is important. That also I'll tell you particularly in this question. So let us say first, what is the prospect? Prospect ये बंदा है या ये कंपनी है जो आपके साथ सेल्स की प्रोसेस में आगे बढ़ना चाहते हैं. मतलब उनका इंटरेस्ट है आपकी प्रोडक्ट में, आपकी कंपनी में, आपके साथ आप में. पर्टिकुलरली द सेल्स पर्सन में भी इंटरेस्ट है कि भी वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं. नाउ टू फाइंड आउट दैट कौन आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं सेल्स की प्रोसेस में, जो प्रोसेस मैंने बताई, कौन आगे बढ़ना चाहता है, दैट इफ टू फाइंड आउट दिस थिंग, दैट इज कॉल्ड अ प्रोस्पेक्टिंग, और वी कैन से द कोल्ड कॉलिंग आल्सो. सो कोल्ड कॉलिंग का मतलब यह है कि भी आप आउट ऑफ अ ब्लू किसी को फोन करते हैं. आपके पास डेटाबेस है और आप उसमें से किसी को फोन लगा देते हैं और अपनी बात रखते हैं कि भी मैं फलानी डिग्नी कंपनी से हूँ, मैं ये बंदा हूँ और मुझे अ, ये प्रोडक्ट आपसे बेचनी है. बट दिस इज अगेन एन इम्पोर्टेंट थिंग. यहाँ पे कई लोग, मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है कि कई लोग अपॉइंटमेंट मांगना भूल जाते हैं. इफ यू विल नॉट आस्क फॉर द अपॉइंटमेंट, so what do they say? I mean, what exactly do they say? They give us the whole thing about the product, company, everything, and then at the end, while the concluding the talk, what do they say? At the end, वो बता देते हैं कि मैं एक काम करता हूँ सर, मैं आपको सब ईमेल में भेज देता हूँ, आप देख लीजिएगा और आपको इंटरेस्ट है तो आप बता दीजिएगा. Now that is not the prospecting. That you are not doing the prospecting. Okay. And this is most people are doing the mistake. Another mistake or another fear, I would say, that अगर प्रोस्पेक्ट को मैंने प्रोस्पेक्ट नहीं मगर सस्पेक्ट, जो डेटाबेस में आपके पास जितने भी नाम वगैरह है, फोन नंबर है, दे आर वी विल कॉल देम अ सस्पेक्ट. अगर सस्पेक्ट, तो सस्पेक्ट को मैंने फोन किया और उसने हमें ना बोल दिया अपॉइंटमेंट के लिए, तो now that na or that the denial, you have to hear, you have to, that is part of the sales job. Okay, हम उसके बारे में और भी बातें करेंगे, बट यहाँ पर भी प्रोस्पेक्टिंग के टाइम पे ना सुनना आपके लिए बहुत कॉमन होना चाहिए. एंड दैट इज हाउ यू हैव टू फाइंड आउट योर रेशियो ऑल्सो. दैट मैं समझो 25 ना सुन के एक हाँ सुनता हूँ, तो आपको समझना चाहिए कि भी आपको दिन में 10 प्रोस्पेक्ट के लिए 250 कॉल करने पड़ेंगे. इतना ज्यादा रेशियो नहीं होता है, एक्सेप्ट दी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यू आर सेलिंग, लाइक द क्रेडिट कार्ड एंड लोन एंड ऑल दिस थिंग्स, तो आप बहुत ज्यादा ना सुनते हो. बट इफ यू आर सेलिंग ठोस प्रोडक्ट, हाँ, कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, कुछ ऐसी मतलब कोई भी B2B या B2C काइंड ऑफ प्रोडक्ट, देन आप इतनी ना नहीं सुनते हो. सो when you are prospecting, just keep few things in mind. That keep your talk to the point, give your introduction, give your company's introduction about the product, and then if you require, then you give some kind of reference, but that to 1 or 2 sentences, and within 1 or 1.5 minutes, you would ask for the appointment. Appointment to be specific. Appointment ऐसे नहीं सब सडम कब मिल सकते हैं, नॉट लाइक दैट. नेवर, यू विल नेवर गेट द प्रॉपर अपॉइंटमेंट ऑफ दैट. हम सीधे ही पूछ लेते, अगले मंगलवार को 2 बजे आपको कैसे रहेगा, मैं आपके ऑफिस में आ जाता हूँ.
बी श्योर कि आप उनका ऑफिस का एड्रेस आपके पास हो, या फिर ना हो तो आप मांग भी सकते हैं। बट ना, अपॉइंटमेंट मांगने में शर्माना मतलब प्रोस्पेक्टिंग में completely failed. So this is what certain things. It's, as I told you, it's a very vast subject. ईमेल प्रोस्पेक्टिंग कैसे होता है, फिर आप कोल्ड कॉलिंग डायरेक्ट किसी के ऑफिस में ऐसे ही बैग उठा के चले जा सकते हो और प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो। So then there are, you know, the C prospecting, O prospecting, no, so many things. T, we call it T prospecting. कहीं पे भी अगर सेल्स कॉल पे जाते हो, हम्म, तो जिस ऑफिस में जाते हो उसके अगल बगल में दो ऑफिस और सामने वाली ऑफिस, टी प्रोस्पेक्टिंग होता है। हाँ, तो कोल्ड कॉलिंग किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। और अगर कोई बंदा, सेल्स का बंदा, उसके अंदर शर्माता है, उसके अंदर हिचकिचाता है, इफ दे आर हैविंग एनी काइंड ऑफ, यू नो, दी उसके अंदर उनको कोई भी कठिनाई होती है, देन दे आर नॉट अ प्रॉपर सेल्स पर्सन। prospecting is a first step, and mind well that if you will take first step, then only you can go further. पहला स्टेप नहीं लोगे तो आगे जा ही नहीं पाओगे। ओके, सो दैट्स, आई थिंक, लिटिल टू मच अबाउट द प्रोस्पेक्टिंग। Yes, मैंने yes. टाइम भी So ज्यादा ले लिया मेरे ख्याल से। no, no, Am I right? that's more absolutely. We are going on the time, no problem. So Right. you have said about the first step. Now moving on the second step. So you said this is the most difficult step. So can you please uh, you know I, can you please take our viewers to the second step now? I think I told you about the prospecting quite a good. Right. And I believe that our viewers would also appreciate that prospecting is, and they'll accept also that prospecting is the most important um, step in the sales process. Now, what are the common mistakes? I also told about that common mistakes you are doing, and that is most important mistake. That is how to ask the appointment. We are not asking the appointment while doing the prospecting. That is the most common mistake we are doing. Now, just a second. So, what I would like to say about the second step. Second step is interviewing. अगर आपने अपॉइंटमेंट मांगी है तो आपको मिलने जाना है, ठीक है। Now, interviewing is also an important step because while interviewing, you are not just talking about your product, your company, your product's benefit, all benefits. They know huh, this information in today's world. They can find out from anywhere in the internet, anywhere within their circles, anyway. You have to find out is you have to find out their needs. कस्टमर को अपने साथ लो, अपने में शामिल करो। Try to do some poking questions, some meaningful questions. And one more thing, and this is again a big subject, और उसके ऊपर हम पूरा एक सेशन कर सकते हैं मिस्टर माली, कि how to communicate when you are at the customer's place. So communication is again a big question. I mean, big subject. So what I'm telling you that when you are at the customer's place for the interview, what you have to do is the first and foremost thing, or say the only thing, is to find out their problems where you can fit your product. That is the only one, say the one line agenda for you while doing the meetings. That meetings can go on and on. हाँ, उसमें अलग 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 चीजें आ सकती है, जैसे कि आपका जो कांटेक्ट है या फिर आपका जो कांटेक्ट पॉइंट बना है किसी कंपनी में, हाँ, उसको आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में बोलते हो और उनको जो सीधे क्वेश्चन जो मैंने बोले, पोकिंग क्वेश्चन करते हो कि भी आपको फाइंड आउट करना है कि किस तरह का प्रॉब्लम है कंपनी में। देन इफ इट इज too technical, then the person is not able to, give you the proper answer and give you the proper information. So in that case, you have to find out that who is the next person.
और अदरवाइज सपोज यू फाइंड दैट जो पर्सन आपके सामने बैठा है, जिस कंपनी में आप जाते हो, और वहां पे जो कांटेक्ट पर्सन आपके सामने बैठा है, वो कांटेक्ट पर्सन डिसीजन मेकर है ही नहीं. सो हाउ टू रीच टू द डिसीजन मेकर? Because you need to talk to the decision maker. Huh? And that is again a mistake. So many, the fresh or even experienced salespersons are doing. They are afraid of going to the directors or the owners or the chairman, managing director of the company. You have to go. Why not? इस बात से कभी घबराना नहीं चाहिए कि अगर उसने मुझे ना बोल दिया, तो उसको भी जरूरत है आपकी, आपकी कंपनी की, आपकी प्रोडक्ट की, और आप वहां पे हैं, आपकी कंपनी. कस्टमर के प्लेस पे आप ही आपकी कंपनी है. सो दे हैव टू टॉक टू यू. सो यू हैव टू फाइंड आउट वेज एंड मीन्स. सो फॉर दैट, एज आई टोल्ड यू, फॉर दैट यू हैव टू डू द प्रोफाइलिंग ऑफ द कस्टमर. दैट इज वन मोर task you are doing while doing the interview. So I would say that should be the first thing to do. Okay, so you do the profiling of the customer, company, as well as the person whom you are talking to. कि वो बंदा कैसा है, वो डिसीजन मेकर है कि नहीं. उसके साथ साथ उनका जो स्वभाव है, उनका जो नेचर है, वो भी फाइंड आउट करवा, वेदर इज एरोगेंट, एगोइस्टिक, इजी गोइंग काइंड ऑफ पर्सन. और उस हिसाब से आप अपनी कंप्लीट सेल्स प्रोसेस के दौरान उसके साथ बात कर सकते हो. इफ एरोगेंट पर्सन है, तो उसको इस हिसाब से बात करना है, उससे भागना नहीं है आपने, उसको उस हिसाब से बात करना है. इफ द पर्सन इज द काइंड ऑफ इजी गोइंग पर्सन, ओके, यू बी फ्रेंडली विद देम. हाँ, मगर फ्रेंडली उस तरीके से नहीं जैसे स्कूल के दोस्त हो, उस तरीके से आप नहीं Right. बन सकते उनके साथ में फ्रेंडली. सो दैट्स अगेन द पॉइंट इन द कम्युनिकेशन. So when you are there to find out the information about the company, what information you will require, so what you have to do, the most important thing is you have to listen to them. Okay, the person who is the proper in, or say the best in communication, is not like me right now. Okay, right now I'm just talking, I'm not listening. So basically communication is should be two way, it should not be monologue, it should be always a dialogue. Dialogue in, and when you are at the sales at your prospect's place, okay, so you are the person who is going to listen more, because you need information, you need to Right. learn so many things. So you are the person who is going to listen more. And to listen more, you have to make such questions so that the person would tell you more. So that selection you have to do according to your experience, according to your training. Yeah, of course, you have to give introduction about your product. You have to tell about your product's benefit, all specialities and the peculiarities of your product, how it is better than your competitor. Everything you have to tell, but not on first go, not on even second go sometimes. Okay, आप अगर जाके तुरंत जैसे ब्लास्ट होता है गन, उस तरीके से पूरा जो भी आपको पढ़ाया गया है आपके ऑफिस में, आपकी कंपनी के बारे में, वो आपने धड़ 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 बोल दिया, क्या क्या होगा? आई मीन, वेदर द पर्सन वांट्स टू लिसन टू यू, यू नीड टू फाइंड आउट. क्या Right. होगा? वो ज्यादा से ज्यादा अपने फोन पे बिजी रहेगा, हाँ, मैसेज देखेगा, या फिर अपने कंप्यूटर पे कुछ ना कुछ निकाल के देखता रहेगा, और अपने काम में बिजी हो जाएगा, या पेपर फाइलें देखना लगेगा. So you have to be sure. You have to Right. give the product information also. How? Wow. कितना देना पड़ेगा, और क्या इंफॉर्मेशन देना. यू नीड टू फाइंड आउट दैट फर्स्ट, कि इनको क्या चाहिए. आपने पूरी टेक्निकल इंफॉर्मेशन दे दी. जस्ट लाइक मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. कहीं पे आप गए हो, समझो ये गिफ्ट आर्टिकल बेचने के लिए, और उसने पर्टिकुलरली बोला है, मुझे मेरे कस्टमर को इंक पेन देनी है, और वो भी कुछ अच्छी सी इंक पेन देनी. So when you're going to the customer's place, your prospect's place, okay, you're putting ink pen in front of them, and then you'll start, the talking about the what is the material. ये जो उसकी टैंक है, वो किस मटेरियल की बनी है, उसकी नीब में आपने कौन सी मेटल यूज की है, और कैसी मशीनरी से वो नीब बनती है. टोटली irrelevant.
Though it is completely true, वो बहुत सही बात है और सच्ची बात है, but it is irrelevant. Yes, very So true. And what you have to tell at that time, that it is how it is useful to the person. वो पेन पॉकेट में रखने से वो कितना प्राउड फील करेगा आपका जो कस्टमर है। वो अगर टेबल पे है, वो कितना प्राउड फील करेगा, उससे कितना अच्छा लिखा जाता है। दैट इज ऑल यू हैव टू टेल। सो that is how the common mistakes people are doing at the time of interview. Now interview is, as I told you, again a long subject, but we'll the finish it over here, and let's go to the next point. Yes, yeah, Mr. so Mr. Hmm. yeah, that was interesting. So now, how about the third step, presentation? Yeah, so as I told you, we have gathered so much of information on our second step. Sometimes you gather the information before going to the second step, even before prospecting, that whether this person is suitable for your product or not. Okay, so you have gathered enough information now, and especially on the second step, or say the interviewing step, you have gathered the information about their particular need, their requirement, their problems, and you have found out the solution also. And maybe during the course of the second step, maybe, I mean, in multiple meetings, you have discussed about the solution also. So what you have to do, and sometimes, and it is also not the bear to do that. Sometimes you also talk about the price of the product, huh, and how the payment cycle should be, and all this. So you put all these things in a particular proposal. You have a format, but the proposal for each customer should be customized. हर एक के लिए एक जैसी प्रपोजल आप लगा दोगे, इस तरीके से करोगे, वो चलने वाला नहीं है। यू कैन विन, यू कैन हैव द सेल्स, बट दैट इज नॉट द प्रॉपर सेल्स यू आर डूइंग। ओके, यू पुट योर क्रिएटिविटी टू द प्रपोजल. So you choose the words, you choose the topics on the proposal, and you have to highlight the solution first. Sometimes the technical guy, I mean, it's a highly technical product, so sometimes the technical guy doesn't know about the commercials. So you make two different, the parts of the proposal. One is technical proposal, another is commercial proposal. So the commercial guys would talk about the commercial, उसमें। और दूसरा जो एक प्रॉब्लम होता है व्हेन यू आर डूइंग अ प्रपोजल, बंदे को समझ में नहीं आ रहा है, सामने वाले को, और सेल्स होता ही नहीं, क्योंकि उसमें समझ, उसको समझ में आए तो वो कुछ आगे बढ़े ना, उसको समझ में नहीं आ रहा है। So you talk in the language of the, or you put that proposal in the language of the customer. वो जो सब लैंग्वेज का मतलब ये नहीं कि हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी, कोई भी, आई मीन तमिल, तेलुगु, वो मैं बात नहीं कर रहा हूँ। वो लैंग्वेज का मतलब है वो क्या समझता है, किस तरीके से समझता है, उसी तरीके से आप उनको समझो, and that is where your creativity comes in. Okay, so that's proposal, and you do the presentation. Now that may not be the accepted, or there are some objections, and it has to be, especially the objection of the price, objection of the some other things. But it is always seen, and as per my experience, किसी और चीज का ऑब्जेक्शन है, वो आके अटकता है प्राइस में। आप प्राइस कम करो, अब तो यू हैव टू फाइंड आउट exact root of his objection, exact root of his problem. So you find out that root, and then you give the proper solution to it. So objection handling, it comes in this step also, it may come in the earlier step also, it may come in the next step also, objection handling. But you have to do the objection handling, you have to handle all those objections, and then after handling the objection, you prepare the next proposal, fresh proposal, and then you they go on the next step, that is a closing. Okay, so before you ask me, Mr. Mali, I'll the jump into the final step of closing. Yeah, What exactly the closing is? Closing is sales close karo, ठीक है? Oh, it's not only that. According to me, sales closing means your relationship has got some other dimension.
You are going in other dimension with the direction, but that we'll talk later. So how to do the closing? और मैंने शुरुआत में बोला कि ये स्टेप बहुत डिफिकल्ट है, प्रोस्पेक्टिंग और क्लोजिंग डिफिकल्ट है। क्लोजिंग इसलिए डिफिकल्ट है कि आफ्टर प्रेजेंटेशन, आफ्टर गिविंग ऑल दिस डिटेल्स, आफ्टर डूइंग ऑल दिस एक्सरसाइज, मे बी समटाइम्स अ डेज एंड समटाइम्स अ वीक्स एंड समटाइम्स अ मंथ्स एक्सरसाइज, सेल्स पर्सन को बहुत अंदर से ये प्रॉब्लम होती है, अंदर से वो डर लगता है कि भी अगर मैंने मांग लिया सेल्स, मैंने ऑर्डर के लिए बोला और उसने ना बोल दिया तो बोल दे तो अगेन, अगर वो आज ना बोलने वाला है तो कल भी ना बोलने वाला है। सो ज्यादातर क्लोजिंग का प्रॉब्लम ये होता है कि सेल्स पर्सन सेल्स के लिए मांगता ही नहीं है। अगर आप मांगते नहीं हो तो कौन देगा? ऑर्डर तो True. मांगना ही पड़ेगा ना, एंड इट्स योर जॉब ऑल्सो। मांगना आपकी जॉब है, अगर ऑर्डर ऑर्डर मांगना आपकी जॉब है। हाँ, अगर आपको ऐसे लगता है मैं डायरेक्टली नहीं पूछूंगा ऑर्डर के लिए, देन यू कैन, यू नो, दी मेक सम अदर वेज। जैसे आप बोल दो कि सर तो फिर आपको डिलीवरी कब चाहिए, या फिर आप ऐसे बोलो कि सर आपकी मैंने देखा कि ये 3 कंपनीज है, बट उसमें से किस कंपनी पे बिलिंग करना है मुझे? हाँ, मैंने तो इस कंपनी पे प्रपोजल बनाया है, इसी कंपनी में बिलिंग करना है या किसी और कंपनी में बिलिंग करना है। सो दैट देयर आर वेज एंड मींस, बट यू हैव टू आस्क फॉर द सेल्स, यू हैव टू आस्क फॉर द ऑर्डर, देन ओनली क्लोजिंग कैन अकर। नाउ क्लोजिंग में दूसरा जो प्रॉब्लम होता है, दैट इज अगेन समटाइम्स, यू नो, यू आर इन फ्रंट ऑफ द कमिटी। कुछ कंपनीज में ऐसा होता है कि बड़ी कमिटी बैठती है कि भी वो परचेज डिसाइड करेगा, एंड प्रोडक्ट भी ऐसी होती है, और उनके उनके जो प्राइसिंग है, उनकी डिमांड है, उनके जो रिक्वायरमेंट है, उस वो भी उसी तरीके से होते हैं। देन यू आर इन फ्रंट ऑफ सम कमिटी, तो डिफरेंट पीपल डिफरेंट ऑब्जेक्शंस, यू हैव टू हैंडल ऑल द ऑब्जेक्शंस। वो प्रपोजल के टाइम पे भी हो सकते हैं, और प्रपोजल प्रेजेंटेशन के तुरंत बाद आपको क्लोजिंग पे आना ही है। इफ यू कांट कम टू द क्लोजिंग, हाँ, प्रपोजल का प्रेजेंटेशन होने में अगर आपके पास ऐसे ऐसे ऑब्जेक्शन आए कि यू हैव टू मेक अनदर प्रपोजल, देन यू डोंट गो फॉर द क्लोजिंग एट दैट टाइम, बट देयर आफ्टर यू हैव टू गो फॉर द क्लोजिंग, नेक्स्ट प्रपोजल या फिर इवन नेक्स्ट प्रपोजल, देन यू हैव टू गो फॉर द क्लोजिंग एंड यू हैव टू आस्क ब्लंटली, सर ऑर्डर कब है वो भी मत बोलो, सर ऑर्डर मुझे अब सप्लाई करना है। सो दैट्स अ क्लोजिंग। और मांगो, क्लोजिंग मांगोगे तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। So that's the very brief about the closing. Again, closing is in itself is a very deep subject. Okay, we can go on and on for Very 2 hours, true, three very hours true. sessions. So Anyway, let's sales, go to in the, fact, is a very, very yeah. huge topic. We can have a lot of discussion on that. Hmm, 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 So hmm. yeah. So moving on with the next question, you Let's have directly go you to this. Let's directly go to the salesperson. Let's talk about the Yes, yes. salesperson now. I That's think what we I'm don't take saying. time. Yeah. You have told us many things about sales. So what about Hmm. the salesperson? So Well. कैसा होना चाहिए सेल्स का बंदा, कैसा होना चाहिए? What are the yeah? और स्पेशली देसी सेल्स बंदा? True, true, true. Because we are concerned about the our Indian, and we consider ourselves as basic, Localization, localized, localization. completely. Sales is all about localization. हम जब छोटे थे और सेल्स में नए नए थे तो बोलते थे कि सेल्स का बंदा चालू होता है। हाँ, होता है, ऑफ कोर्स होना चाहिए, बट अगेन आई वुड से, अगर उसमें ऑब्सेशन नहीं है, So उसका sophisticated word है go getter, go street getter, smart. yes, that's also, but that sales obsession, sales का obsession होना चाहिए। As I told, communication should be powerful and to the point। बाकी बहुत सारी चीजें हैं, मैं क्या बोलूं आपको, आई मीन, let me give a completely brief about the salesperson's characteristics। I have pointed out around 20, okay, and that not exactly about the salesperson, but that is about the virtues, or say the good things and good habits about the salesperson. Like say one, and that may be a generalized for this good guy also, good person also, not only the salesperson. So one thing is
Go early for your work. Okay, early birds get the worms. अगर आप जल्दी से काम पे निकलते हो, बहुत सारे उसके उसके बारे में बहुत सारे फायदे मैं गिना सकता हूँ, मगर एक छोटा सा फायदा कि अगर आप अपनी ऑफिस पे लोग आते हो उससे पहले आधा घंटा पहले पहुंच जाते हो, तो आप अपना काम आराम से खत्म करते हो। और प्रोस्पेक्टिंग का जो टाइम आपने दिन में एक बार 1 घंटा प्रोस्पेक्टिंग करना है, तो सब लोग जब आने शुरू होते हैं तब आपका प्रोस्पेक्टिंग शुरू हो गया। आपने जो सुबह का थोड़ा सा रूटीन वर्क है वो आधे घंटे में निपटा लिया, तो सब आते हैं, या फिर आपने प्रोस्पेक्टिंग निपटा लिया आधे घंटे में। कई बार मैं क्या करता था कि मैं कंपनी की ऑफिस पे मैं कोल्ड कॉलिंग पे नॉर्मल टाइम से जल्दी पहुंच जाता था। 10 बजे का ऑफिस टाइम रहता है और मैं 9:30 पौने 10 बजे किसी के ऑफिस पे चला गया। मैं सोचता था कि आज तो इसको पकड़ना है। और जब भी मैं लास्ट टाइम गया था तो वहां पे जो रिसेप्शन पे जो बंदे बैठे थे ना, वो मुझे रोक लेते थे, तो आज साहब ये है। या फिर मैं फोन करता था, उस टाइम पे तो लैंडलाइन फोन थे, तो लैंडलाइन फोन मैंने किया तो बी श्योर कि भी जो रिसेप्शन पे बंदा बैठा है ना उसके साथ उस वो अपना काम कर रहा है, वो उसके साथ अपने फंडे होते हैं अपने, हाँ, उसके अपने फंडे होते। मगर मैं 10 मिनट पहले ऑफिस टाइम से 10 12 15 मिनट पहले मैं फोन करता था, तो डायरेक्टली, क्योंकि बाहर रिंग बजती है, बाहर रिंग पूरी हो जाती है, तो डायरेक्ट वो बॉस के ऑफिस में बजती है वो रिंग। जो बोर्ड पे रिंग बंद हो जाती है तो बॉस के ऑफिस में डायरेक्ट बॉस से मेरी बात हो सकती थी, और मुझे तुरंत अपॉइंटमेंट मिल जाती थी। सो that are the benefits of the the early going to the work. Then you should be honest. How? When I am talking about the being honest, not only to your company or the product and all this, you have to be honest to the customer, and most important, you have to be honest to be yourself, honest to yourself. ये बड़ी बात है, honest to self. You are, when you are honest to the self, you are telling truth to you, huh? When you are all honest to the others or in your job, you are telling truth to the world. Means integrity, means you are honest to yourself, you are telling truth to yourself. और कई बंदे हैं, और स्पेशली ये पर्टिकुलरली सेल्स जॉब में ऐसे बंदे हैं। बाकी कोई जॉब में, मुझे बाकी कोई फील्ड में इतना ज्यादा नहीं होता है, मगर सेल्स की जॉब में ऐसे बंदे हैं जिनको लगता है मैं गलत जगह पे बैठा हूं, और फिर भी वो 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल 15 साल अपनी पूरी कैरियर वो गलत जगह पे बिता देते। मत करो ऐसा कभी भी। इफ यू थिंक दैट you are at the wrong place, means you are not selling the right things. If you are not convinced with your company, if you are not convinced with the product you are selling, don't do it. Go and find out the other uh, job or other company, other product. Why not? You are, your core strength is your customer base. If you are not selling the product for which you are not convinced with, what will happen? You are cheating your customers, you are not making your customer base. और ये बहाने भी मत बनाओ कि मुझे जॉब नहीं मिल रही है, मेरे बच्चों को पालना है, मेरे बच्चों की फीस भरनी है, मैं कैसे करूं। मैंने जॉब छोड़ दी थी एक, सही में। मैं एक रियल एस्टेट कंपनी में था। मैंने 2 ढाई साल वहां पे जॉब की और उनके लिए अच्छा काम किया, मगर जब पता चला कि इस कंपनी में हम्म, करीब 100 करोड़ का घपला है, मेरे पास नौकरी नहीं थी, बच्चा छोटा था, मैंने जॉब छोड़ दी। और मैं सही में बेकार था, बट आई नीड टू डू दैट। आई हैव टू, I have to be honest to my customers, and more than that, I have to be honest to myself. So being an honest, and one has to be honest. मैंने दो ही टॉपिक लिए, बहुत लंबा बात कर लिया। So another thing is you be, you take a proud of your वर्क। अगर सेल्स के लिए True. अगर आपको प्राउड ही नहीं है, व्हेन यू आर नॉट, जो काम करते हो उसमें आपको प्राउड फील नहीं होता है, तो वो काम मत करो। और वाइस वर्सा, जो काम करते हो उसमें प्राउड लो। इफ यू आर एन अकाउंटेंट इवन, देन यू बी प्राउड ऑफ बीइंग एन अकाउंटेंट। Well, the Mr. Mali is well aware that accountant, being an accountant is most thankless job. हाँ? सब लोग गाली देते True. हैं,
बॉस भी True. गाली देते हैं और एम्प्लॉयज भी गाली Vendors देते हैं, भी बट गाली देते हैं. exactly. But being a salesperson, you have to be, you have to take proud in your job. If you cannot take proud, then don't do that job. I don't want to be negative, but that's why I'm telling you that you should be proud of your job. Then I told you you have to be obsessed. Then you have to be in line with your customer. कई लोग मैंने कई कई बार मैंने बंदे देखे हैं कि भी सेल्स लेते हुए वे लोग इतने नीचे गिर जाते हैं। वाई? क्यों? क्यों ऐसा करने की जरूरत है? जितनी आपको जरूरत है उतनी उनको जरूरत है। हाँ, आप प्राउड मत करो उनके सामने इगोइस्टिक मत बनो, उनके सामने अरोगेंट ना बनो, उनसे ऊपर होने की आप वो मत दिखाओ, बट यू आर एट द सेम लेवल, बात ही उसी तरीके से करो। हाँ, एनीवे, उसके लिए मैं को बहुत अच्छा एग्जांपल दे सकता हूँ, बट नॉट नाउ। Then you have to manage your day very efficiently. That is not only the salesperson but all the other person, but salesperson के लिए वो बहुत जरूरी है, क्योंकि सुबह सुबह जब ब्रश करते हो तभी भी आपके दिमाग में सेल्स घूमना चाहिए। That is about the obsession, but even at that time you have to manage your day, that मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ठीक। और मैं ये सही में बोलूंगा कि सुबह का टाइम जो है वो आप प्रोस्पेक्टिंग के लिए रखें। प्रोस्पेक्टिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं अगेन एंड अगेन प्रोस्पेक्टिंग पे आऊंगा। प्रोस्पेक्टिंग के लिए रखे आप सुबह का टाइम। आपने तय किया कि मुझे आज 20 कॉल करना है, मतलब करना है, किसी भी हाल में करना है, और बहुत सॉरी आप सुबह ही कर दो। 20 कॉल में से आपका रेशियो है कि मुझे 5 अपॉइंटमेंट मिलेगी, एंड दैट इज इनफ फॉर यू, बिकॉज हफ्ते में 5 अपॉइंटमेंट के हिसाब से हफ्ते में आपके पास 30 अपॉइंटमेंट्स हो गई। 30 अपॉइंटमेंट्स के हिसाब से अगर आपका रेशियो 5% का है तो 1.5 सेल्स मिल जाएगा आपका। 1 वीक 1.5 सेल्स, और महीने में आपको 6 सेल्स मिल जाएंगे। बट यू हैव टू फाइंड आउट दैट रेशियो एंड यू हैव टू मैनेज दैट रेशियो। ओके, 5% है, 10% है, तो 3 सेल्स मिलते हैं आपको। एनीवे, सो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू कि भी आपका जो दिन है वो बहुत अच्छे तरीके से आपको प्लान करना पड़ेगा। देन यू हैव टू बी कॉम्पिटिटिव, यू हैव टू बी इन कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन मीन्स विथ वुम? कंपटीशन किसके साथ? आपकी जो कॉम्पिटिटर कंपनी है उसके साथ, आपके कलीग्स है उसके साथ, सबके साथ कॉम्पीट कर लिया और आप टॉप पे पहुंच गए। उसके बाद कहां पे कॉम्पीट करो? उसके बाद खुद से कंपटीशन करो। आपका जो पुराना रिकॉर्ड है उसको बीट करो। टॉप सेल्स पर्सन आर ऑलवेज डूइंग दैट वे। जस्ट 1 मिनट, मिस्टर मालिक। So that's how this, the then another, as I told you that sales is a relationship building. So relation किसके ऊपर डिपेंड करता है? परस्पर एक दूसरे के ऊपर विश्वास के ऊपर। So you have to build a trust also, and you have to show them that you are a trustworthy person. Okay, well, I'll go, the quickly. Then you should be self-motivated person. Your motivation should not go down at time. You should be self motivated person. मेरे जैसे की मदद की या फिर किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर की मदद की जरूरत नहीं होनी चाहिए, कभी भी नहीं। बीइंग अ सेल्स पर्सन, गुड सेल्स पर्सन, सेल्स पर्सन should always be, are and should always be self motivated. उसके लिए कई तरीके हैं, हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। Then again, very important, you have to take responsibility of your mistakes. Suppose you find, or suppose somebody points out that this is your mistake. Okay, maybe your boss, maybe your colleague, maybe a customer, especially customer. कस्टमर कई तरह की मिस्टेक्स आपकी बताएगा। यू हैव टू accept if it is genuine and real mistake. If it is not genuine also, sometimes I also used to accept it, because small defeats are always accepted. अगर कस्टमर विन कर सकते हैं आप, अगर सेल्स विन कर सकते हैं, then why I'll go for the the small wins. I mean उसने कुछ बोल दिया तो I'll take that defeat and I'll win the sales, because sales is bigger than that small defeat. Okay, so you have to accept your mistakes and accept your defeats. Then follow up, ये बड़ी चीज है। फॉलो अप कभी नहीं करते हम।
अब कभी प्रोस्पेक्टिंग करने के टाइम पे आपके पास डेटाबेस था और उसमें से कई बंदों ने बोल दिया कि "भी एक काम करो, मुझे 2 महीने बाद फ़ोन करना, मैं आपको जवाब दूँगा।" मगर 2 महीने बाद हम भूल जाते हैं, हमारे पास नया बि डेटाबेस है, हम वो भूल जाते हैं, हम कुछ करते ही नहीं। और वो डेटाबेस कई बार एग्ज़ॉस्ट हो जाता है और हमारे पास प्रॉस्पेक्ट ही नहीं है, पाइपलाइन खत्म हो गई, अब क्या करें? हम सेल्स नहीं कर सकते। इवन आफ्टर द प्रॉस्पेक्टिंग, हाँ, आप किसी बंदे के वहाँ गए, आपने पूरी प्रोसेस भी कंप्लीट कर दी और सेल्स नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? पूरी प्रोसेस के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि भी उनके जो इंटरेस्ट है वो बदल गए, उनका जो बजटिंग है वो खिसक गया और आपकी प्रोडक्ट के लिए बजट नहीं है अब उसके पास। एंड यू फॉरगॉट द फॉलोइंग अप। मेरा एक एक दोस्त था, वो डेढ़-डेढ़ 2-2 साल तक बंदे को फॉलो अप करता रहता और ही वाज गेटिंग द सेल्स आल्सो। इंटरनेशनल मार्केट, हाँ, दैट टू इंटरनेशनल मार्केट एंड दैट इज अ बिग थिंग। एनीवे, then again, as I told you, this steps of the sales, I told you about 4 steps of the sales that you have to follow strictly: prospecting, interview, proposal presentation, and then closing. Never try to jump over the step. मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, अगर अगर आप अपने किचन गार्डन में टमाटर के बीज बोते हो, और आपकी इच्छा है कि भी बढ़िया से टमाटर मुझे सलाद में खाने को मिले, मगर जैसे ही बीज अंकुरित हुए और उसमें से पौधा बनने लगा और छोटा सा पौधा बना और उसके ऊपर बढ़िया से हरे रंग के पत्ते आ गए, आपने पत्ते तोड़ के सलाद में डाल दिया तो उसमें से टमाटर का स्वाद कभी नहीं आने वाला है। When you're jumping to this step, you're doing something like this. So don't do that. Never jump on the steps. और अगर आप ऑनेस्टली ये स्टेप्स फॉलो करते हो, देन आई एम डेम श्योर कि आपको क्लोजिंग के लिए शायद ऑर्डर मांगना ही नहीं पड़ेगा। सामने से कस्टमर बोलेगा, वो मजबूर हो जाएगा कि आप ऑर्डर ले जाओ। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द बेस्ट एंड टॉप सेल्स पर्सन आर डूइंग। That's what they are doing. Anyway, so 13th, what I am telling you is, I already told about that. You work on the same level. Okay. Then again, sorry, Mr. Molly, I'm taking little more time. No, no, it's interesting. People are What I have to enjoying. say है, तो उससे ज्यादा मैं बोल रहा हूँ। तो No, no problem. We are tell we are on tell the the time. No truth, problem. टेल ओनली द ट्रूथ। और इसके बारे में मैं सब जो भी सेल्स ट्रेनर है उनसे टोटली डिफरेंट। नॉर्मली सेल्स पीपल आर, आई मीन द ट्रेनर स्पेशली, क्या बोलते हैं कि व्हेन यू आर डूइंग द सेल्स यू हैव टू से सम ट्रूथ एंड सम फॉल्स। और हमें जो सिखाते थे वो बोलते थे दैट इज नॉट अ फॉल्स स्टेटमेंट, दैट इज अ ट्विस्टेड ट्रूथ। अरे भाई, जो भी है वो ट्रूथ नहीं है, वेदर इवन इफ इट इज अ ट्विस्टेड ट्रूथ। एक बात मैं इतने एक्सपीरियंस से सीखा हूं, मेरा सेल्स नहीं भी होता है उस टाइम पे, मगर मैंने अगर सच बोला है तो वो बंदा मेरे पास हमेशा रहता है। वो जो प्रोस्पेक्ट है, वो उससे मेरा रिलेशन हमेशा रहता है। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट वन पर्सन देयर इन जॉर्डन। ओके, नहीं हुआ मेरा सेल्स। मेरी कंपनी ने मुझे, एंड इट आई वाज डूइंग द इंटरनेशनल सेल्स सिटिंग इन अहमदाबाद। इट वाज अ बिग कंपनी, बिग शॉट कंपनी। तो कंपनी ने बोल दिया कि भी आप इस तरीके से बोलो और उसको कुछ भी समझा बुझा के सेल्स ले लो। मैंने उसको एग्जैक्टली वो वर्ड्स नहीं किए और वो ऐसा नहीं किया, और मैंने ये भी नहीं बोला, मेरी कंपनी के बारे में भी बुरा नहीं बोला, मगर मैंने उसको ट्रुथ बोला। हाँ, मैंने असत्य था वो छिपाया, दैट इज ट्रू, बट जो भी असत्य था वो मैंने बोला नहीं उसको, वो जो भी गलत था वो भी नहीं बोला मैंने। He's still in touch with me, huh? It may be a 10 years back, this thing. He's still in Wow, touch with amazing. me. And he's in touch with me with a, I mean, he's the, वो मुझे मानता है कि he's a good hearted person. अभी तक मैंने उसके साथ, उसके बाद सेम प्रोडक्ट की मैंने 2 और कंपनियां की, मैंने बिजनेस नहीं किया उसके साथ बिकॉज टर्म्स नहीं बैठे, काफी कुछ होता है उसमें, बिजनेस नहीं किया, बट वी आर गुड फ्रेंड्स एंड व्हाई नॉट, why not? I mean, he is also proud to be a friend of mine, and I am also proud to be a friend of him. So one of the biggest shot in appliances industry, trading industry in Jordan.
सो दैट इज हाउ इट हैपेंस, यू नो। आपको आपको लगता है, और आपको ज्यादातर ट्रेनर्स बोलेंगे कि भी झूठ बोल के सेल्स ले लो ना, आपको आपका जॉब है सेल्स लेना, कैसे भी करके सेल्स लेना, बाय हुक और क्रुक। और ऐसा एक और चीज भी है जो मैं शायद इसमें मैंने लिस्ट आउट नहीं किया, बट लेट मी टेल यू, एंड आई बेग योर पार्डन मिस्टर माली, बट आई कैन नॉट, यू नो, मैं उसको बोले बिना नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि डेफिनेटली सर। एक बहुत पुरानी बुक है और बहुत माने हुए ऑथर की बुक है, उसमें बोला है कि सेल्स मीन्स व्हाट, either convince or confuse or corrupt a person. Totally wrong. Completely humble. You may call me an you know, the old school guy, but this is similarly true in new school also. आपके नए मार्केट में भी, मैं तो शायद बूढ़ा हो गया, बाल वाल काले करता हूँ, बट दिस इज सिमिलरली ट्रू इन न्यू स्कूल ऑल्सो, क्योंकि अभी बंदे और भी ज्यादा होशियार हो गए हैं। दे आर हैविंग, यू नो, दी प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन इन एट देयर फिंगर टिप्स। बस में जाते हैं, प्लेन में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, अपनी कार में बैठे हैं, कहीं पे भी दे हैव गॉट दैट इंफॉर्मेशन। सो आप अगर कुछ भी झूठ बोलते हैं तो आप यकीनन पकड़े जाएंगे। हमारे जमाने में हम पकड़े जाने का जो जो रेशियो था, जो उसके चांसेस थे, वो बहुत कम थे, मगर अभी तो यकीनन पकड़े जाएंगे। And your sales is gone, and forget about that sales. Your career is at this stake. अगर मार्केट में बात फैलती जा रही है कि एक या दो या तीन लोगों को आपने इस तरीके से गलत बातें बताई, गलत इंफॉर्मेशन दी, गलत चीजें बताई, गलत टर्म्स बताए, गलत प्राइस बताए, what will happen to your career? Nothing. You are nowhere. So don't talk rubbish. And True. that particular thing, that convince, confuse, or corrupt, that 3C formula of the marketing and sales, that is also a rubbish thing, totally rubbish thing. Though it's you know, the very well known and very uh, uh, very much, you know, the तो कई कई जगह पे उनकी बुक चलती है, और वो आईआईएम जैसी जगह पे भी चलती है उनकी बुक, वो पर्टिकुलरली उसी बुक में उन्होंने लिखा है, बट आई टोटली डिनाई, आई मीन टोटल डिनायल ऑफ। I say only first step is good. Convince. Try to convince. And if you're good at it, you don't need to confuse the person. जितना भी कंफ्यूज करोगे, आपको कल को, मैं यहाँ पे वो वर्ड नहीं बोल सकता, मगर आपको कल को वो कुछ ना कुछ बोल के चला जाएगा। आपने शायद वो सेल्स ले भी लिया, हाँ, देन कम्स करप्ट। व्हाई व्हाई डू यू नीड टू करप्ट? हाँ, वो बोलते हैं कि भाई अगर हमने गवर्नमेंट में काम करता है तो देना ही पड़ेगा। जेम पे जाओ, why do you want to corrupt the person? Why do you want to give a bribe to the person? I had done business in the government without giving any kind of bribes. बंदे ने मांगा भी है, और स्पेशली जब पेमेंट लेने का वक्त आता है तब मांगा है, बट वेज एंड मीन्स, देयर आर वेज एंड मीन्स, हो सकता है। एनीवे, सो एक अच्छे बंदे की तरह टाइम टाइम पे अगर किसी की मदद कर सकते हो, अपनी कम्युनिटी के लोग, अपनी कम्युनिटी मतलब सेल्स पर्सन, देन ऑल्सो इट्स अ गुड वर्च्यू फॉर द सेल्स पर्सन। अपनी कलीग को मदद करो। कई बार होता है कि भाई मेरा टारगेट खत्म हो गया, मेरे पास 3 लीड ऐसे पड़े हैं कि भाई श्योर शॉर्ट सेल्स है, मैं किसी को नहीं दूंगा, मैं अगले महीने यूज करूंगा। भाई, है? किसी बंदे को मदद करो। अरे, कंपटीटर कंपनी के बंदे को मदद करो, मैं करता था और करना चाहिए। क्यों? आज आप इस कंपनी में हो, कल मार्केट में खुले घूमते। विपुल भाई के पास गए, दूसरी कंपनी मुझे दिला, शायद विपुल भाई के पास जाना ही ना पड़े आपको, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी मेड योर मार्केट, योर फ्रेंड्स एवरीवेयर इन योर फील्ड। एंड जाता क्या है, वैसे भी आप 20 कॉल तो रोज के करते हो प्रोस्पेक्टिंग के लिए, 3 लीड बढ़िया से पड़े हैं, दे दो उसको मतलब। not only that, some other kind of, you know, the help also you have to do. Anyway, then you have to be a leader to, अब इसका इसका क्या कनेक्शन है सेल्स से, वो मैं अभी, now time is really going very fast. Then you have to, you know, the make your information very updated. As I told you, this is information blast. This era is, you know, the information era, and everybody has got that information. अगर आपने कुछ भी बोल दिया, मुझे ही एक बार हुआ था, कोई बंदा मेरे से एक्सपोर्ट सीखने आया,
और उसने एक पर्टिकुलर चीज बता दी, और मेरा तब अपडेट कम रहता था। जो भी एक्सपोर्ट के नए नोटिफिकेशन आते हो, मैं गलत हो गई, एंड आई फेल्ट sorry for that. My information was not updated. So your information should always be updated, especially आपके मार्केट की, आपके कस्टमर के मार्केट की। यू फाइंड आउट द प्रोफाइल योर कस्टमर है, उस कस्टमर के मार्केट की इन्फॉर्मेशन रखो। और जैसे बाकी लोगों के लिए स्मूथ है इन्फॉर्मेशन निकलना, आपके लिए भी स्मूथ है। हम्म। काम पे जाते हो, गाड़ी में बैठे हो, बैठे बैठे आपने इन्फॉर्मेशन निकाल ली अपने मोबाइल से, दैट इज ऑल्सो वेरी easy for you. So you have to be updated, I mean to say. Then, you know, grab the opportunity. हमारे गुजराती में एक कहावत है कि भी जो तक बोलते हैं अपॉर्चुनिटी, उसको आगे बाल और पीछे टाल होती है। अगर आपने आगे से नहीं पकड़ा ना, यू कैनॉट ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। True. ओके। There are so many things, but let's try to conclude the session now. And I would say, before going to the, I mean, let's skip this step, because I already summarized so many things. I already talk about the salesperson, and let's, if we can have a chance, we can keep the another session also. So if Definitely. somebody from So we would love to have your second session at the time of your book launch, because many few users have I asked want about your book also. So definitely we would love to See, have that. I won't say that that is in my hands. Okay, I would say that that is not in my hands. Book launching, well, it is all about the publisher. Okay, we can Publisher, talk I can about understand. my all the books on sales during our sessions. Even before that, before So launching, even I we don't can have. have a special detail sessions about the good and bad, bad habits Yeah, about the yeah. Good and bad salesperson. habits, the do's and don'ts. So Yeah, many yeah, things I need to discuss about the yeah. salespersons. Yeah. So audience is really appreciating our session. Thank you, Komal, Meet, If for we the can appreciation. have questions, then we can take the questions Yeah. if So somebody question wants the to. questions which we had was mainly, audience was asking about your book. So this book is more, or if you can tell us about your book, as you said, that will be something future की बात है, right? तो उसके बारे में लोग पूछ रहे हैं हाँ, about the books. जो भी बुक के बारे में जानना चाहते हैं, उनको बता दूं कि भी इट इज राइट नाउ आई हैव कंप्लीटेड द स्क्रिप्टिंग, आई मीन मैन्युस्क्रिप्ट इज कंप्लीट, बट book publishing is a the complex, again a complex process. So उसको बहुत सारे स्टेप में से पास होना होता है, but you can always contact me on my the Yes. all the social media handles. Yeah. We have We can shown talk all about these social. the people who have asked about the book, they can contact me on my social media, and we can Definitely. go on further. Yes. So, yes, I'm Vatsalji, thank sorry you. I took a little, No, not little, no need to say double sorry. time, We double have time. enjoyed it. It was your experience sharing. It was your knowledge sharing, and we really enjoyed it. So before we conclude, before we let you go, please let us know about the final words, your final words, your guru mantra, your success mantra, which inspires you, and if you can have any short message for our audience, then please. Short message. You saw that I don't have much short messages. I have all long messages anyway. But I would say that when you are in sales, वो आपके दिमाग में 24 घंटे होना चाहिए. You don't take it as a job, just a job. इट्स योर पैशन, इट शुड बी योर पैशन. 24 घंटे चलना चाहिए सेल्स. आप ऑफिस में हो या नहीं हो, आप सेल्स कॉल पे हो या नहीं हो, आप अगर अपने फैमिली के साथ डिनर पे हो या वैकेशन पे हो, कहीं पे भी, सोते सोते, जागते, बैठते, कभी भी आपके दिमाग में सेल्स चलना चाहिए. अदरवाइज यू कैन नॉट बी अ सेल्स पर्सन. दैट्स द Very rightly मैसेज. said. Yes. And Thank you. thanks to all Th- the all the participants. Thanks, Mr. Mali. Thanks, Bossa yes, sir. Resume. Yes, sir. Thank you so much for your valuable inputs. आपने जी जान से जो अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, जो आप
बुक अभी राइट मतलब लिख रहे हैं, उसमें से जो निचोड़ है हमको बताया. सो थैंक यू सो मच फॉर योर एक्सपीरियंस शेयरिंग. आई एम श्योर ऑडियंस वुड हैव एंजॉयड इट. एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट कि धन्यवाद. आपकी आपकी ऐसी बुक्स पे बुक्स आती रहे. एंड आप आफ्टर बुक लॉन्च you come here for the second book launch on our session, and we would love to have you again and again. Thank you so Thank you. much, sir. Thank Stay you. blessed. Thank you. Take care, sir. Yeah. धन्यवाद. Thank you. धन्यवाद Thank सबके you. सबको धन्यवाद. बाय. Thank you so much, sir. Yeah, thank you. Thank you. Yes, audience, thank you so much. Hope you have enjoyed the session. This was fantastic session. Vatsalji has given a detail about his experience. He has shared his detailed experience. उन्होंने अपना जो सेल्स का एक्सपीरियंस है उसका पूरा निचोड़ दे दिया, जो 1 आवर में देना बहुत ही मुश्किल था. यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट विथ हिम if required on the social media handles we have shown during the live sessions. So, audience, this session was powered by Post Resume HR Consultancy. Post Resume is into recruitment services since 2007, and we are providing recruitment services predominantly for IT, engineering, and pharma industry. We are open for other industries also, but our focus area is these three industries. And we do provide services across India, Africa, and Gulf since 2007. So last more than 14 years, Post Resume is serving to Indian, African, and Gulf market. So if you are looking for any career guidance, any career assistant, any job related services or help, then do contact us. We don't charge anything from candidates. Yes, just to clarify. If you are from company, and if you want any assistance related to your talent solutions, then do contact us. We will be happy to help you. Yes, thank you so much for the appreciation. Thank you. We are happy that you are appreciating our live sessions, and this is 20, this was 27th session, and see you next Friday 5 p.m. with another expert with his who will be happy to share his expertise with you. So till then, stay blessed, take care of yourself, your family, and keep smiling. Thank you so much. Bye bye.